मैं क्वेश्चंस पेस्ट कर रहा हूँ। तुमने मुझे केमिस्ट्री का पेपर नहीं भेजा तुमने? केमिस्ट्री पेपर। मॉक टेस्ट। हाँ जी। ऑल राइट। कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स। आंसर लिखते जाओ। आवाज तो आ नहीं रही तुम्हारी। एक काम करूं, इसको म्यूट कर लेते हैं। शुड आई कॉल यू फ्रॉम द लैंडलाइन? फोन से मतलब। मोबाइल पे ना? ठीक है, इसको म्यूट पे कर जी। लो। म्यूट पे कर लो। हाँ जी। यस सर। आई एम ऑडिबल। आई थिंक इट्स वर्किंग, इट्स ऑल, यूर ऑडिबल नाउ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ये रहे क्वेश्चन। करते जाओ।
ऑल राइट, आई एम बैक। हाँ जी, पहला। हाँ जी। Work done by the gravitational force. यस, 0. ठीक है। नेक्स्ट। नहीं, Perpendicular. You have to explain that also. Just not write zero, but you will also explain it. The displacement and the force are at an angle of 90 degrees. yes Since sir. theta is equal to 90. तो पूरे नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट। Yes sir. Second is true. नो, it only depends on the initial point and the final point in the case of height. Power is the rate at which you do work. So how fast you raise determines the power, which is अच्छा, the rate of the work. But work is only dependent on initial and final point in a conservative force. So mgh, पर ये एक्सेल mgh में स्पीड कहाँ पे आ रही है? नहीं मतलब फोर्स मास इनटू एक्सेल। अच्छा, mgh है, ठीक। रेज्ड अप है ना? हाँ सो इट ठीक। डज नॉट। हाउ ठीक फास्ट का मतलब है इज रेफरिंग टू पावर। तुम्हारी पावर कितनी है, वर्क उतना ही कम कर रहे हो, लेकिन पावर पे अगर डिपेंड जल्दी कर उठा रहा है। लोगे तो पावर ज्यादा है। ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स। गुड। थर्ड आता है। एक मिनट। ओके, चल। um that it is true. हम्म। एनी रियल लाइफ एग्जांपल? अगर लाइक, सर्कुलर मोशन, हाँ जी। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर यस। टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द आर्क, उस पर टेंजेंट बनाओगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द आर्क। और लीनियर अदरवाइज, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। इन अ सर्कुलर मोशन। नो नो नो, वो तुम यू आर टॉकिंग अबाउट फुल सर्कल। हाँ Even जी। if you're not moving the full circle, you're moving at some angle only, हम्म, then also your work done is zero, which means you do no work in this. This is the center, and if I join these two, and I say this is the scenario, right? The force is perpendicular, remember, to the velocity. ये तो पता ही है. This is nothing new, right? यस You सर। are referring to displacement as in full revolution. That हाँ is जी। true for any shape, not just circle, because any shape में कोई भी shape हो तो if you're back in a conservative field, the net net work will be zero because your displacement is zero. ठीक है। इसके अंदर what we studied earlier also was the way you articulate this is that your work done, your power is given by force into velocity, for example, right? So your यस। force is mv square by r, and your velocity is displacement upon time. ठीक है।
सो ये जो फोर्स है, रिमेंबर ये जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, ये आर्क वाली स्मॉल, ये तो बहुत मैग्नीफाइड व्यू है, बट एक्चुअली इट इज डी एक्स ओनली. हाँ जी. dx, which is the arc, is always perpendicular to the force, the centripetal force vector. Yes, sir. Not because of the reason that it comes back to the initial position. No, that is not the answer. And you can also give the example of the first question, when the body is on a Gravitational horizontal force. surface. You can give that also. वहाँ पे भी there is no work done, although you think you are doing some work, but the direction is 90-degree. There is no work done by the gravitational force. You can give example 1, Okay. and you can give example of circular motion. ठीक है, अगला. Uh, no, sir. क्या? A light body and a heavy body may have the same kinetic energy, Right. but the greater linear momentum would be in the heavy body because the mass is more. Okay. So let's say the kinetic energy can be written as p square by 2m. हाँ जी. The so p will be given by under root 2 k e m. You have to give explanation also, na? So Yes, sir. kinetic energy is same. So p1 by p2 is equal to under root m1 by m2. So m1 is greater, so p1 is greater. You do a comparison also with this. If you just write yes, no, get no answers. Explanation is very important. Answer was right, but without explanation. ये करके दिखाना था. Okay. Algebra, comparison का. Next. Yes, sir. If the momentum is doubled, the kinetic energy becomes 4 times of ठीक its है, initial. ठीक है. So you know how to write it also. Okay. Okay. The work done by a non-conservative force. Generally, resistive forces are the Work done is non-conservative negative force. Yes. because opposite direction, like Yes. angle. 180-degree. That is correct. They always tend to reduce the mechanical energy of the system. मैकेनिकल मतलब या तो काइनेटिक एनर्जी कम कर देंगे या पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस कर देंगे. ओके. ठीक है, सिक्स्थ वाज राइट. बॉडी हैव अ मोमेंटम विदाउट एनर्जी. Energy. No, that is not नो. true. यस. Because kinetic energy का formula ही वही है, p square ठीक है, upon 2m. ठीक है. ओके, जस्ट बिफोर दे हिट द ग्राउंड. ओके. This may require slight amount of calculation because your v is under root of 2gh. Velocity does not depend on mass, but velocity is under root 2gh, which is common. तो जिसका मास n टाइम्स है वो हो जाएगा m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh. तो nm टाइम्स अंडर रूट. तो योर मोमेंटम ऑफ द हेवियर बॉडी विल बी n टाइम्स द लाइटर बॉडी. गॉट इट? अंडर Yes, रूट टू sir. जी एच होगी ना वेलोसिटी रेस्ट से छोड़ा तो. जस्ट हाँ. बिफोर द हिटिंग अंडर रूट टू जी एच कॉमन फॉर बोथ. उसके बाद मास से मल्टीप्लाई करा, मोमेंटम आ गया, तो n टाइम्स ज्यादा होगा मोमेंटम. ठीक है, नेक्स्ट. एक मिनट. नो प्रॉब्लम.
the spring constant would be also half. No, no. Spring constant is a property of the material. So if you just reduce its length, the material will exhibit same K. F by X has not been changed. The ratio of F for every 1 meter, you will still need same force. You did not change copper to aluminum. You did not do anything. Property वही रहे तुम अगर कॉपर को टुकड़े को आधा कर दोगे तो उसकी डेंसिटी कॉपर राइट मटेरियल रिमेन्स मटेरियल Yes, sir. It won't be affected. yes they should not have given this question थोड़ा आगे आना चाहिए था बट हाँ this maybe it's too early to ask this but as a general rule remember this that the same spring just cutting into two half you go to each half the behavior is same but if you connect them in parallel or series you can get a new spring constant वो हम अभी हमारे कोर्स में नहीं है next oh it's harder so K is very high KA is greater than KB सर equal to ए pull में it ज्यादा वर्क होएगा. सर ए में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. so you have used the rule F is force is same if the force is same then the अच्छा फोर्स displacement अच्छा will be सेम very फोर्स है. small in A हाँ जी. same तो display बी में same ज्यादा वर्क stretching नहीं बी है में ज्यादा वर्क होएगा. so remember F but you will have to write it FA is equal to KAXA FB दोनों सेम ही है is equal to KAXB the the work done gets stored in the form of spring potential energy UX is given by half K A X A square and the energy which is stored in the other one is half K B X B square. Now because Ka is bigger than Kb because it is a harder spring, your x is very small, right? So if you divide these, you will get Ka by Kb, which is a very small number because this is much harder. Sorry, this is very large. Ka is bigger. For every 1 meter, it requires more force. Multiply by, uh, we can write it as xa square upon xb square. So if you want to write this Ka by Kb from here, you can write Ka by Kb is equal to xb by xa into xa square upon xb square. This cancels. This also cancels. So you get xa upon xb. And now you know xa is very small because if you apply the same force with a high harder, it is low amount of stretching will happen. So x is smaller. Just one second. Sorry. So you can see x is very small, right? हाँ जी. So your work done. So which of the following will क्या था question? So the work done will be less.
in A. बट ए में ज्यादा फोर्स नहीं लग रही। सेम फोर्स है, यही तो अच्छा प्रॉब्लम सेम है। फोर्स, द अच्छा फोर्स सेम इज सेम, फोर्स है। राइट? अच्छा अच्छा, तो हाँ तो ठीक है। कितना स्ट्रेच कर पाओगे उसको? ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। फॉर द सेम फोर्स, डिस, नॉट फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कम रहेगी, फोर्स तो सेम ही है। तो तो वर्क डन का वर्क फॉर्मूला लगा डन लो, ऑन एनर्जी स्टोर्ड में ये वाला। एफ ए बी में ज्यादा वर्क होएगा, कि ज्यादा यस, डिस्प्लेसमेंट होगी। यस, बट यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस टू जस्टिफाई योर आंसर। कि एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ के ए एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन ए बाय एनर्जी स्टोर्ड इन बी। फोर्स से ये एक्सप्रेशन आया, substituting, then showing that x is wb. ठीक है, नेक्स्ट 11th। लॉरी, लॉरी क्या होता है? इट्स अ जेसीबी मशीन, जो बुलडोजर टाइप लॉरी। अच्छा। सर सर आंसर बताओ इसका, क्या लिखूं? सर दोनों का सेम ही रहेगा। सेम डिस्टेंस पे वो रेस्ट पे आ जाएंगे।
So kinetic energy is a potential energy. So B part नहीं आता. So if you take it up, you are raising its potential energy, right? mgh. Okay. Taken away against the gravitational force. मतलब So ऊपर you're ले जाना taking, होता है इसका मतलब. huh? ऊपर ले जाना. Huh? अच्छा अच्छा. अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में तो ये ग्राउंड है आपका, you're taking it away, right? So you're raising its potential energy. It doesn't want to go there. If you leave it there, it will come back to its most stable position. That means zero potential energy. और A वाले two dissimilar charges are brought near each other. Which is Potential very energy. nice. Lowers, decrease हो जाती है. It is like chemistry, right? Nuclear charge हाँ जी. attracting electrons. Stability Yes. gets increased. Potential energy goes down Okay. if two dissimilar charges are. Electron cloud होता है. So हाँ जी. in a chlorine halogen group, if you remember, हाँ हाँ. chlorine was More exhibiting, yeah, more electron gain enthalpy than fluorine. yes, which was a on in a group strange, but it has more number of shells. Fluorine Yes. is much smaller. Much smaller than chlorine. So it has more repulsion within the electrons which are in the outer shell. And Yes. therefore it doesn't accept electrons very easily हाँ जी. because it increases potential energy. So it's very Yes. difficult to add more electron. In fluorine atom. Yes. होता है. हाँ जी सही है. 2% Next. plus the person A जिसने 1 मिनट में लोड को रूफ में रख दिया था उसके पास ज्यादा पावर हुई. Yes. For the same work done. हाँ जी. और Work done मोर is वर्क. common. MGH. वर्क डन इसको नहीं. वर्क डन तो MGH. मोर वर्क तो नहीं होएगा. बट आपका वर्क डन तो आंसर है द सेम है वर्क दोनों डन के. इज आइडेंटिकल इक्वल. और पावर पर्सन ए के पास जिसने 1 मिनट राइट. में लोड. ठीक है. 14th. तो फर्स्ट का इन इलास्टिक कोलिजन. Yes. मोमेंटम चेंजेस बट की डज नॉट चेंज. इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. कह सकते हैं. You can also have a circular motion. एक In a चीज पे circular डाउट है. motion, पर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है ना कोलिजन्स में. तो हाँ, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इलास्टिक. हमेशा. इन इलास्टिक Perfectly कोलिजन. elastic is not the right answer. सॉरी. तो गलत आंसर सर्कुलर है. मोशन. सर्कुलर मोशन. Circular motion. Velocity remains constant, but नहीं momentum changes वेलोसिटी नहीं. because of change in direction. तो स्पीड कांस्टेंट रहती है. वेलोसिटी चेंज होती रहती है. हाँ, तो इसलिए तो मोमेंटम बदलता है क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर. यस. It's a vector that changes. यस. Okay, this we discussed. ये आ कल सकता करा है. था. सारे ही आ सकते हैं. Very good questions. ठीक. Show that power is equal to dot product of force and velocity. वर्क डन का फॉर्मूला लिख के Because टाइम से डिवाइड कर दो हाँ जी. डॉट प्रोडक्ट में. What is a head-on collision and what is a oblique collision? head on and oblique. Yes.
I don't overlap. Hmm? Okay, let me just tell you because I think we have not discussed oblique. All the collisions we have done, जेई के कोर्स में तो है ही है, थोड़ा बहुत आता है oblique collision का. So most of the collisions we have discussed are of this variety. Okay, so the variety looks like this: that the line of center of the two centers of these bodies is a horizontal. ठीक है. ठीक है, ये हमने पढ़ा. ठीक. This is what हाँ we have जी. studied. This collision is called as a head-on collision. हाँ जी. But two balls or bodies are colliding, there's अगर horizontal center ऐसे था, इसकी जगह ऐसे बन जाता है. If you connect the two centers. So this is the second case is the case of oblique collision. So oblique collision. When the line joining the two center is not a horizontal, but at an angle with the horizontal. And this, the first one, is a case of the normal head-on collision. So this is your head-on collision. Okay, the line joining the centers is horizontal, parallel to x-axis. बिल्कुल हेड ऑन. अगर ऊपर नीचे हो गया थोड़ा भी और सेंटर एक लाइन में नहीं आए, वी हैव अ oblique collision. ठीक है. Okay. ये लो सर. Next. Nice question. Very analytical. Very application oriented question. Three balls. नहीं, 3 नहीं 2 है. ध्यान से देखो. 1 2 3. पहले पढ़ लो फिर देखो. मेरे हिसाब से सर सी होना चाहिए. सॉल्व इट ना. सी होना चाहिए. सी में व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम? हाफ into 3m into v by 3 whole square. हम्म. So which is one third of the initial velocity, initial kinetic energy. The तो initial kinetic energy is half mv square. Half 3m into v by 3 whole square.
समझ आ गया मैंने क्या बोला? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हैज टू रिमेन कंजर्व्ड। यस सर। तो हाउ डिड यू फाइंड आउट कि ये कंजर्व्ड है? मेरे हिसाब से तो हाफ इंटू 3m, बिकॉज दे स्टिकिंग टू ईच अदर, जुड़ गए आपस में, इंटू v/3 होल स्क्वायर। ये तो नहीं आ रहा हाफ एम वी स्क्वायर जो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे है। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल मोमेंटम इज 3m मल्टीप्लाई बाय v/3, राइट? तीनों चिपक गए तो फाइनल मोमेंटम इज सेम एज इनिशियल मोमेंटम, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी 1/6 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। योर एनर्जी इज नॉट इवन कंजर्व्ड। हाउ डिड यू से इट इज इलास्टिक? First thing you have to check in elastic collision is whether the energy got conserved or not. Look at this. Half एम mv बी square. ओके। Straightforward. ये भी inelastic है। लास्ट। ओके। Take this. सर दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन। Inelastic. Elastic Okay. Agreed. as because the momentum remains conserved. नहीं नहीं, इट इज बिकॉज नहीं, वो तो इलास्टिक की डेफिनेशन है, बिकॉज का तो आंसर ही अलग है। व्हाट इज योर सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट? किस किस का तुमने लिया है इसके अंदर? अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर इसका मैंने एक डाउनवर्ड मोमेंटम है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को। हाँ, वो तो आ रहा है आंसर। चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। सर, कर लो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, राइट साइड पे मोमेंटम है, और और लोअर पार्ट लेफ्ट। का क्या है मोमेंटम, देख लो लोअर पार्ट का क्या मोमेंटम है। तो ये तो चेंज हो रहा है। इनिशियल मोमेंटम राइटवर्ड है, इनिशियल मोमेंटम राइटवर्ड है, और फाइनल मोमेंटम लेफ्टवर्ड है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं, माइनस एम वी साइन 30। वो एम बी साइन 30 आ जाता है चेंज इन मोमेंटम। नहीं, माइनस एम वी साइन 30 आएगा ना। अरे ये नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर रहा मैं भी हूँ, कॉस हॉरिजॉन्टली लिख 30। रहा हूँ, ये लो कॉस लिख लो यार। तुम इसको मैं ठीक कर देता हूँ, मैं तो उसको पहले वो लिख रहा था। ठीक है, यू राइट, मैंने गलती से, लेट मी राइट। तो चेंज इन आ तो रहा है, एम वी कॉस 30 माइनस है, फाइनल मोमेंटम लेफ्टवर्ड है तो नेगेटिव हो गया। फाइनल मोमेंटम इज लेफ्टवर्ड, ये वाला, पल्स निकल गई। माइनस एम वी कॉस 30। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। और इनिशियल मोमेंटम राइटवर्ड है कंपोनेंट के हिसाब से, तो चेंज इन मोमेंटम तो आ रहा है यार, -2mv cos 30। बिल्कुल आ रहा है, यू राइट। Vertically you can see on the diagram that there is no change in momentum vertically, but horizontally तो यार momentum बदल रहा है। This is like a rebound, infinite wall. A ball strikes, it's an elastic collision, and it goes back, right? Elastic collision है तो हमने बोल ही दिया energy is conserved. It comes with 5 meter per second, rebounds with 5 meter per second, for the simple reason that this is a wall which is infinitely large. तो उस फॉर्मूले में v2 और v1 के m2 को डाल देंगे हम, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m1। अग्रीड? यस। उस फॉर्मूले से हमारा रिबाउंस आ जाएगा, वी विल गेट v1 इज इक्वल टू माइनस u1, और जहां जहां पे हमें मिलेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, हम बोलेंगे क्योंकि m2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m1, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस m2। एंड द डिनोमिनेटर में भी हम यही बोलेंगे, सिंस m2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m1, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू m2। ये कट जाएगा उस फॉर्मूले के अंदर और ये आ जाएगा, और वॉल तो रेस्ट पे ही थी और बाद में भी रेस्ट पे ही है, तो ये आ जाएगा, रिबाउंड हो गया। यहाँ पे भी रिबाउंड है, 200 से आए तो काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस है नहीं,
साफ साफ नजर आ रहा है, मोमेंटम हाफ का एम भी वी लॉस नहीं है। स्क्वायर एंड हाफ एम वी स्क्वायर, नो चेंज। बट मोमेंटम चेंज तो आ रहा है यार एक्स में। मोमेंटम चेंज आ रहा है। हाँ तो तुम बट कह रहे थे कि इलास्टिक कोलिजन है, बट हाँ, मोमेंटम कैसे कंजर्व तो रहेगा ना हर एक कोलिजन से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो द आंसर इज, ये मोमेंटम जो मैंने निकाला है चेंज, ये किसका निकाला है मैंने? ये अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का निकाला है। बॉल का निकाला है, मॉलिक्यूल का, हाँ। सॉरी। तो वॉल वॉल और इसके बीच में इम्पल्सिव फोर्स जनरेट हो रही है, राइट? द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज एग्जिस्टिंग हियर, यस सर। so it will also result in the change of momentum of the wall, हाँ जी। but it is not visible to your eyes because the size of the wall is infinite. अगर इसका चेंज इन मोमेंटम -10 आया फॉर एग्जांपल, तो वॉल का होगा +10, तो नेट चेंज कितना हो जाएगा? 0. यस सर। So you have to take the system of interest, which is the wall of the container and the molecule together. If you just see molecule, गए काम से। Overall collision में momentum is conserved, but is the momentum of molecule only conserved? I'm sorry, the sum is conserved. द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। Yes, is conserved. So you have to see the system वही of पूछा है। interest. Eh? वही तो पूछा है, टोटल मोमेंटम। Yes. Deliberately इन्होंने दिया conserved in the collision. Yeah, in the collision it is. Equal and opposite momentum is getting transferred in the same amount of time. So F into T, which is imparted to the wall, and F into T, which is imparted to the molecule, is same, but in the opposite directions. यस। ये तो दिख ही रहा है, इलास्टिक। 17th।
Okay, so 5% gets lost. Not very difficult. सही है. Then you know this आता है. निकल ही जाएगा स्क्वायरिंग ठीक है, करके। नथिंग. स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आ जाएगा. 0 0 भी कट गया, 5 भी कट जाएगा. 95 15 to 85 28.5 आ रहा है. Yeah, 28.5. Roughly 5 fives are 25. 5.4. 6 six are 36 है. Roughly 5.4. करके देख सकते हैं. 54 into 54, 55 into 55, something like that. रफली Anyway, 5.3 मान। okay, works. ये लो. So this is a two-dimensional motion. इसमें x और y axis में you have to have the same equations, but it's lengthy to do actually. काइनेटिक एनर्जी लगाना और उसके बाद तीन बनते हैं. एक वाई एक्सिस में मोमेंटम, एक एक्स एक्सिस में मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में सिस्टम का. एक बॉडी रेस्ट पे है और उसके बाद दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में. सो दिस इज अ टू डायमेंशनल टाइप ऑफ मोशन.
ये करा हुआ है पहले तुमने? द एनर्जी कंजर्वेशन एक्स एक्सिस में भी लगानी है, वाई एक्सिस में भी लगानी है? ये इस टाइप का नहीं करा मैंने। ओके, so you have to conserve in a momentum in both the situations, x and y. So the strategy is always to break down the motion in x and y. These are independent motions. जैसे वन डायमेंशनल का करते हैं वैसे ही करना है. एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आती है वाई एक्सिस की. That means breaking down of the vector is a strategy. Okay, so let me just show you one. So what is your initial momentum? Pi. The body is moving with 3 meter. मास सेम है दोनों का, राइट? बहुत अच्छी बात है. एंड इट कोलाइड्स, सो योर इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू 3. किस एक्सिस में सारा मोमेंटम शुरू में? x एक्सिस में. It collides with a similar mass body and then they move at two angles, 30 degree and the other angle. You have to find the final speed, which is v1, v2 and the second angle. Now what is the final momentum of the body in x axis? दोनों का अगर निकालना है तो इसका ले लो v1, इसकी स्पीड ले लो v2, दी भी हुई है v2. So it will be m into v1 cos 30 plus m into v2 cos theta 2. ठीक है, दिस इज क्लियर. थर्ड इज p फाइनल y मोमेंटम. y के अंदर इफ आई लुक इनटू द मोमेंटम, इट इज m v1 sin 30 and minus m v2 sin of theta 2. Applying law of conservation of momentum in x-axis and y-axis. So this particular expression, which is this pi, ये x में है सारा, initial momentum is equal to this. So 3 into m is equal to m v1 is v1 पता नहीं है, so v1 multiply by root 3 by 2 plus m v2 cos theta 2. So m is gone. 3 is equal to v1 root 3 by 2 plus v2 cos theta 2. So ये अननोन आ गए सारे एक ही के अंदर. वेलोसिटी नहीं मालूम है दोनों की, और किससे आई है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस. सो द होल स्ट्रेटेजी इन दिस क्वेश्चन इज टू डू vector resolution of momentum. If you notice the second part of the equation, the final momentum is in y-axis. Our initial momentum in y-axis does not exist. Okay, so p initial y-axis is equal to 0. So we will apply the law of conservation in y-axis. So this becomes equal to 0. So you will get m to chala gaya, so I will not write m again, I will remove m from here. So I get v1 by 2 is equal to v2 sine of theta 2, right? So I have, this equation is in two variables, v1 v2. This equation has all the three variables, theta 2, v2, v1, which are unknown. So since the collision is elastic, they collide elastically, it is clearly mentioned that the collision is elastic. Using that, what I will say is half m v1 square. So this was coming with 3 square. I'm applying kinetic energy remains unchanged after the collision and before the collision. So this will become v1 half
मास तो सब जगह से कट ही जाएगा, प्लस हाफ, देर इज नो एंगल इन एनर्जी, एम वी टू square. So m goes away from all, and 2 also goes away from all. So what you get is that 9 is equal to v1 square plus v2 square. Third equation. So now you have three equations. Equation number 1, okay, and equation number, sorry, this was root 3 by 2. So I think the 2 should be written. So equation number 1, y-axis say equation number 2, and equation number 3. Okay, so if you pick up equation number 2 and 1, पहले तो मैं ये जो root 3 by 2 वाला हिस्सा है, I take it on the left hand side, I will get 3 minus root 3 by 2 v1 is equal to v2 cos theta 2. This is what I get. इसको LHS में ले गया मैं, x axis के momentum वाले में, squaring both the sides, I will get here v1 square by 2 है, sorry, okay. So if I square this, squaring both the sides, and I squared this also, if I square this also, so I will get a v2 square sine square theta 2, I will get a v2 square cos square theta 2. So on the LHS I will get v1 by 2 whole square plus, this is completely full, plus 3 minus root 3 by 2 v1, ये 2 डायमेंशन में, इसलिए वो वाला जो फॉर्मूला वेलोसिटी का डायरेक्ट नहीं लग सकता, बिकॉज द एंगल इज अननोन, इज इक्वल टू v2 square. So we have found a relationship between v2 square and v1 square again. So this will become v1 square by 4 plus 9 plus 3 by 4 v1 square minus 3 root 3 v1 is equal to v2 square. You can put the value of v2 square as 9 minus v1 square. So 9 minus v1 square divided by 4 plus 9 plus 9 plus 3 by 4 v1 square is equal to, ये कितना आ रहा था, v2 स्क्वायर की तो हमने वैल्यू डाल दी ना, 9 माइनस v1 स्क्वायर, हाँ ये डाल दिया, एंड दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय 4 लिख दिया, 9 माइनस, सॉरी ये इक्वल टू था ना, सो दिस इज v1 स्क्वायर, ओहो रॉन्गली प्लेस्ड. So this will become a quadratic in v2, sorry v1. v1 square, v2 square is on the other side. ये है v2 square. So मैंने यहाँ से v2 square की वैल्यू यहाँ पे फिट करनी है. So this will become v1 square by 4 plus 9 plus 3 by 4 v1 square, ये लो जी पेन का क्या हाल हो रहा है, माइनस 3 रूट 3 v1 इज इक्वल टू, ये पूरा स्क्वायर कर लिया था, और दिस इज इक्वल टू v2 स्क्वायर विच इज 9 माइनस v1 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. ये बन गया 5 बाय 4 v1 स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ मच, अच्छा दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू अस, ये कितना था यार,
3/4 राइट, सो 3/4 एंड एक ये भी आ रहा है 5, तो 8/9 आ गया यहाँ पे। 8/9 v1 स्क्वायर -3 √3 v1 इज इक्वल टू, ये दोनों तरफ से 9 भी कट गया, ओके, सो 9 इज गॉन फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो इक्वल टू 0। टेक फैक्टर्स फ्रॉम दिस। एक फैक्टर है v1 इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर है आपका v1, ये 8/9 है, तो 8/9, okay, and -3 √3, -3 √3. Solve it, you will get v1. Put it here, you will get v2. Put in any one of them, you will get a theta found. So basically कुछ भी नहीं था, x एक्सिस और y एक्सिस में मोमेंटम लगाया, काइनेटिक एनर्जी हमेशा की तरह वैसी लगाई, तीन वेरिएबल हो गए, दैट इज द ओनली डिफरेंस। आई सी नो डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन एंड एनी अदर क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी है सॉल्व करने में, दैट्स ऑल। समझ आ गया? यस सर। So conservation applied in two dimension, that's all. I mean momentum conservation, energy की तो कोई वेक्टर होती नहीं है, so कोई लगाने की जरूरत नहीं होती है। Now very exam centric question, okay, and it's a very tricky one, and therefore it's a very different way of solving. Okay, so let me change the page first. I think this is not working anymore. I'm just adding a page. ये थोड़ा सा एग्जाम सेंटर्ड क्वेश्चन है, मुझे याद है हमारे पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ओके, एंड द क्वेश्चन इज, if you have a two-dimensional collision, you have to prove that if the masses are equal, then they move at right angles to each other. प्लीज कर दो क्वेश्चन। So it's a two-dimensional motion, yes it is, but they're equal mass, so mass is equal, and you have to prove that the scattering happens in such a way that they move at 90 degree to each other, which means the angle which is between them is 90 degree. You can write all of that जो भी मैंने सारा ऊपर लिखा था, लेकिन इसमें एक ट्रिक होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सॉल्व करने के टाइम पे, which is a trick of dot product, because if you prove two vectors, velocity vectors v1 and v2, which are the final velocities in this direction, if the dot product of these two vectors somehow can be proved to be v1 v2, if it is proven to be 0, you get your answer, the dot product of v1 v2। 90 डिग्री सुनते ही किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए the dot product is a very handy tool to take, to use. So इसके अंदर क्या करना है आपको, same, but you have to prove that the dot product is 0. So I'm going to write same, m was my, I don't know मैंने क्या है ये, mv is the momentum of this initial momentum. The final momentum as usual I'm writing as m, x axis में था initial momentum, तो I'm writing the final momentum of x axis also, which is cos theta 1 plus m, masses are equal दिया हुआ है, they're equal mass, so mv2 cos theta 2, okay, conserving momentum in x axis लगा दिया, और आगे इससे v is equal to v1 cos theta 1 plus v2 cos theta 2, एक इक्वेशन निकाल ली हमने। Okay, now let's write the same equation for the y-axis. Y-axis में there was no initial momentum, 0 is equal to, however, mv1 sin theta 1, तो ये बन जाएगा, अगर मैं इसको लिखूंगा, is equal to final momentum in the y-axis. My equation will become v1 sin theta 1 is equal to v2, sorry क्या आ रहा है, v2 sin theta 2, masses are same, so वो नेगेटिव साइन उधर चला गया क्योंकि एक का मोमेंटम अपवर्ड है, एक का डाउनवर्ड था, ऐड करते हुए नेगेटिव साइन आया, टोटल मोमेंटम 0 था, तो इक्वल टू ये आ गया। इक्वेशन नंबर 1
and equation number 2 solved. Now energy conservation. So v1 square, sorry, u. If this is your initial velocity, तो u लिखना better रहेगा, u. So let's write it as u. इसमें तो आएगी नहीं u. So this is equation number 2 from conservation of angular momentum in y-axis. So applying kinetic energy conservation, it's an elastic collision. v1 square half mv square 1 से, sorry, अब u लिखना है मुझे इसको. This is my u square. The initial kinetic energy is equal to v1 square plus v2 square. राइट. सो 3 इक्वेशन बन गई, 1 2 3. प्रूव करना है ये लेके आना है फाइनली दो, राइट. वी नीड टू गेट दिस, दैट after the collision their velocities are v1 v2 and the dot product of the two is equal to 0. तो 3 ये तो नॉर्मल बन गई, 1 2 3. एनीबडी विल डू दिस एंड गेट दिस. प्रॉब्लम इज व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस. अब क्या करें? एनी आइडिया? डॉट प्रोडक्ट v1 v2, 3 इक्वेशन भी अवेलेबल है अपने पास. अच्छा, ओके, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं आराम से. हाँ, v1 डॉट v2 क्या आएगा अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो तो? इसने लिखा है यूज एक्सप्लिसिटली दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मैंने देखो जितनी भी अभी तक लिखी है इक्वेशंस, उसमें मोमेंटम को वेक्टर की तरह लिखा नहीं है. व्हेन आई हैव नॉट रिटन दिस, राइट, एक्सप्लिसिटली, I have not tried to do this. He's saying explicitly try and use the concept of vector. चलो vectorially भी लिख लेते हैं, खुश रहो. चलो, वैसे तो ये, by the way, this is nothing but v1 dot v1. ओके, जस्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं v2 dot v2. Okay, so v2 dot v2 is v square and this is also u dot u, by the way. Okay, u तो मुझे चाहिए भी नहीं क्योंकि मुझे तो आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट v1 and v2 रिलेशनशिप. u तो मेरे को चाहिए ही नहीं फाइनली. So एक u का रिलेशनशिप मुझे यहाँ से मालूम है, एक v1 v2 का मुझे यहाँ से मालूम है. Now I know it's a dot product. What can I do to get rid of? So if I try to square this, what happens? I don't know what will happen. The square, if I square this or I square these, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इन दोनों को स्क्वायर कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 2 को, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा 1 और वो वाली दिक्कत चली जाएगी हमारी. इसको मैं वापस ले जाता हूँ ना यहाँ पे, तो जीरो इज इक्वल टू लिख लेता हूँ. माई एंगुलर मोमेंट, सॉरी, द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन वाई एक्सिस इज एक्चुअली v1 sin theta 1. m कट गया सारी साइड से, therefore I am saying v1. I am not saying sin theta 1 minus v2 sin theta 2. Final momentum in y-axis. If I do squaring of both the sides, this equation and this equation, तो I can get a v1 square cos square theta 1 और नीचे वाले से I can get v1 square sin square theta 1. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी. If I do a squaring तो मेरे को ये भी मिल जाएगा, देखना लेफ्ट पे u square आ जाएगा मेरा. So I'm getting u square is equal to v1 square cos square theta plus sin square theta 1 को, इसको मैं 1 बना लेता हूँ. I will also get a v2 square by the way, क्योंकि ये v2 square cos square theta और ये इसके साथ v2 sin square theta 2 के साथ ये भी 1 बन जाएगा. So I get a v2 square and I will get 2 v1 v2 cos theta 1 cos theta 2 एंड इसका भी स्क्वायर करूंगा जब मैं, तो इसके साथ भी मेरे को मिल जाएगा माइनस 2 v1 v2 साइन ऑफ theta 1 theta 2. Okay, but I don't know why it is not coming. ये साइन
थीटा 1 है और ये साइन ऑफ थीटा 2 है। ओके, तो इधर देखो, ये वाली इक्वेशन तो हमारे पास आई रखी है कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस, तो ये तो कट गए। सो वी आर गेटिंग यू टू वी वन वी टू कॉमन दोनों में से, एंड अंदर आ रहा है मेरा कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, right? Now these two velocities are non-zero velocities. 2 is also non-zero, is equal to 0 equation में, which means only choice is how can this expression become 0? That theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degrees. What is the other choice you have? Final velocities, vectors exist, they're non-zero. So theta 1 plus theta is equal to 90 degree, which means the two bodies are scattered by an angle of theta 1 plus theta 2. So this total angle is 90 degrees. So if you have two bodies colliding elastically having same mass in a two-dimensional collision, they will go at right angles to each other. Proven. ठीक है। राइट, सो ये याद भी रखना है, ये 12th में भी बहुत सारा काम आएगा, कई चैप्टर्स में कई जगह पे यूज होता है, नॉट ओनली वन प्लेस, मेनी प्लेसेस यू विल यूज दिस। ट्रिकी क्वेश्चन। ओके सर। ओके, ये तो तुम आराम से कर लोगे, ये भी कर लोगे। पावर भी आती है, आती है। Okay, so this is a good question to do because it forces you to think in terms of conservative force and non-conservative force. So you can see the distinction, how the two, very similar to what we have already discussed by way of that surface, जिसके अंदर एक area के अंदर there was some patchy surface, friction was there, so you lost energy there. Okay, try this. It's a nice question to do. Can calculate the total work done. इंडिविजुअली बोल रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स सेपरेट है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स सेपरेट है। आई डोंट नो, मास इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, सो व्हाई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड जीरो? व्हाटएवर वर्क इज देयर इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग, मैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ। दैट्स ऑल। हाफ एम वी स्क्वायर बिकम जीरो, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए यू विल डू फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी और उसको नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड कर लोगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। रुक जाइए एक मिनट, वाई आर यू राइटिंग माइनस? बिकॉज वो रेस्ट पे आ गई ना। मैं डेल्टा की ओके निकालने ठीक वर्क है, डन। फाइनली तो काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर, राइट? सो ठीक है, लॉस दिखाना चाहते हो तुम, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो फ्रिक्शनल फोर्स का नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, एफ इन टू एस, 2 मीटर्स, 200 2 मीटर्स, सही है। नहीं, 200 जूल्स। अच्छा, यू कैलकुलेटिंग इट, ओके ठीक है, कैन डू दिस ऑल्सो।
Today the Zoom is not helping. Anyway, I will upgrade it and buy unlimited. सर क्या हो गया? हाँ जी. जूम क्या कर रहा है? I don't know. कई बार if you create too many boards, it will start disturbing you. तुम्हारा सही आ रहा है, मेरा सही नहीं आ रहा. Your side is working fine. बिल्कुल सही लिख रहे हो तुम. मेरा नहीं आ रहा सही. फ्रिक्शनल फोर्स आ गई. Okay, न्यूटन्स. न्यूटन कट जाएंगे नंबर. न्यूटन माइनस साइन के साथ आएगा. So to show it समथिंग is. ऑफ 100 सर आइजैक न्यूटन. वाह. सर आइजैक न्यूटन. ओके. नाम वैसे सर ही उसको ऑनर करने के लिए. हाँ जी. सही है. 100 न्यूटन आ गया फ्रिक्शनल फोर्स. अब कोफिशिएंट निकाल. F is equal to mu mg. निकल जाएगा बहुत अच्छा आराम से क्वेश्चन बात. है. I think mixes lot of concepts, work done, friction, stuff like that. काफी ज्यादातर मुझे अच्छा. डायनेमिक्स आती है. हाँ. हाँ. अच्छी बात है, मुझे डायनेमिक्स आती है, वरना ये भी नहीं होना था. Yes. Yet you cannot have this such a large one. 2 2.5 point. Huh? ज्यादा आ गया है ना. Half mv square. Half mv square 4 into 10 square. सही लिखा है 200. Force or distance covered is F into 5. ये क्या है 5? ऐसे ऐसे. अच्छा सॉरी. F into S is equal to तो F is मैंने. equal to 100 न्यूटन. म्यू mg थोड़ा ज़्यादा नहीं है म्यू. हाँ एक बार चेक कर लो आंसर एक बार. How will you check? I don't have any answers. एक मिनट. Wait, 200 joules is equal to F into 5. F is equal to 100 न्यूटन. म्यू m mass is g. सही लिखा है 2.5. अच्छा. That's kind of weird man. हो भी सकता है वैसे. 0.25 0.1 देखें यार, ये कौन सा सरफेस है भाई. ये क्या पता सर, बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ सरफेस हो सकता है. मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स 2.5 times द नॉर्मल रिएक्शन. ओ बेटा. ओ हो क्या फ्रिक्शन होगा भाई. मेरा वेट है 40 न्यूटन और मेरी फ्रिक्शन लग रही है 100 की. 2.5 गुना ज्यादा. यही नहीं रेशियो ही है ना. दिस इज हो. व्हाट द रेशियो टेल्स. फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन. वाह. ठीक है. व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल अभी तक मैं फोर्स? आंसर चेक कर रहा हूँ उसका मुझे. 200. ठीक तो है. अब आंसर क्या चेक करोगे इसमें? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन assumed. Kinetic friction. सर सही है आंसर 2.5 ही है. ठीक है. चलो तो फिर. थोड़ी है. वर्क डन इज 200 minus 200. ग्रेविटेशनल फोर्स नो वर्क डन. सही है. सही है. डन है. अच्छा क्वेश्चन था. नहीं भी था. इजी था. हाँ ठीक है. यू डिड प्रीटी स्मार्ट. ओके ठीक है. लेट्स डू वन थिंग. टुमारो लेट्स प्रैक्टिस प्रोजेक्टाइल एंड काइनेमेटिक्स. ठीक है आई सर. थिंक वर्क पावर तो काफी करा हमने. वर्क पावर काइनेमेटिक्स में कोलिशन. मतलब हम वो कर लेंगे आगे. एक तो मोशन इन अ प्लेन 2D हाँ. वाला. 2D हो गया. और एक सेपरेट वो हो गया चैप्टर. फ्री फॉल. हाँ फ्री फॉल. अग्रीड. रिलेटिव मोशन. फ्री फॉल. और एक वी हैव टू. ओके. हैज योर स्कूल एक्चुअली डन वर्टिकल सर्कल?
यस सर, एक्चुअली में। वो लंबा टॉपिक है यार. So long topic. Anyway, well, let's do it then. करवा रहे हैं तो मैं उतना करवा देता हूँ कि you can handle your school because I had no clue has been done. So let's discuss vertical circle also tomorrow. एक ही करेंगे. Let's do some kinematics and vertical circle. अभी projectile छोड़ देते हैं. Projectile then is a very time consuming topic. और प्रोजेक्टाइल में वैसे भी मतलब हाँ, आता है you have मैंने वैसे। आता है. I know this. तो kinematics थोड़ा पीछे रह गया. So we'll do some new types of problems in kinematics and let's do vertical circle. It's a complex topic, but I will draw a limit कहाँ तक करना है उसको. Then I have noticed some topics we need to cover, but get over your exam first. Some topics for JEE mains have been left out, which we need to cover later in maths and physics. ठीक है जी. Talk to you tomorrow then.